Now today let's start with chapter number first, nutrition in plants. In this chapter we will study about what is nutrition. Nutrition hota kya hai? Autotrophic mode of nutrition and importance of photosynthesis and heterotrophic mode of nutrition in plants. I will take you further in the chapter. Now let's start with the chapter. Now look at the picture of some items. Can you identify what kinds of food items are given below? ये किस तरीके के फूड आइटम्स है? यू हैव टू टेल दैट. Each living organism required to carry out basic process like reproduction, respiration, nutrition and growth. This what they do. With the help of this, they maintain the life, and for carrying out all life processes, each living organism need a daily supply of food, which is provided by the food consumed by them. वो कौन provide करता है? That is provided by the food consumed by them. Food contains substances that provide nourishment to the body, and these are called nutrients. What are they called? They are called nutrients. What is nutrition? What is nutrition? The process of taking food by an organism and its utilization of the body. It's known as nutrition. We have two modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic modes. First, I will tell you about autotrophic nutrition. Auto means self and trops means nourishment. Organisms that are capable of making their own food. जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, they are known as autotrophs. And their mode of nutrition is called autotrophic nutrition. This type of nutrition is found in green plants. What they do, they prepare their food themselves with the help of air, water and sunlight. इस process को क्या कहा जाता है? Photosynthesis. Now, they have green pigment called chlorophyll, which helps to prepare food in the presence of heat. इनके पास एक green pigment होता है, which is known as chlorophyll. With the help of chlorophyll, what they do, they prepare food in the presence of sunlight. Next is heterotrophic. Hetero means होता है other, and trops mean rotation. They cannot make their own food. They are dependent upon others to food. Thus, heterotrophic nutrition means obtaining nutrition from others. The plants and animals that do possess chlorophyll cannot synthesize their own. They need other sources of food. अगर उनको survive करना है, they will need other sources. These organisms depends upon plant directly or indirectly. Some can consume plants directly. कुछ directly consume करता है, कुछ indirectly consume. Autotrophic mode of nutrition. Plants prepare their food with the help of green pigment present in them called chlorophyll. And the process of synthesis of food is called photosynthesis. और जब हम food को synthesize करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. नाउ फोटोसिंथेसिस लीव्स ऑफ प्लांट्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे जो हमारी जो लीव्स हैं वो ग्रीन फॉर्म में दिखाई दे. व्हाट दे ट्रैप सोलर एनर्जी. द फूड इज देन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट. The process is known as photosynthesis. Now, like here you can see the process of photosynthesis, proper amount of sunlight, carbon dioxide, and it is having, and what it is giving to us, it is giving to us oxygen. Now the process of equation, and this is the equation, that is carbon dioxide plus water. Water gives glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorine. We can say 6CO2 plus 6H2O water. Water gives C6H12O2 plus 6O. Now chlorophyll has a high tendency to trap sunlight, and the trap solar energy, what it do, it enables the water absorbed to split into hydrogen and oxygen. Carbon dioxide, which is absorbed by tiny pores in the leaves, is reduced by hydrogen, and what it forms glucose. Like glucose contains chemical energy, and the food prepared by the leaves is stored in the form of simple sugar called glucose.
or this glucose is sent to different parts of the plant. What we do, we see it send these glucose to different parts of plant, and the extra glucose is converted into another food called starch. और जो आपका starch है, it is stored in the leaves of the plants. Glucose and starch belong to the category of food called carbohydrates. ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी. ठीक है. ऑक्सीजन जो होती है, जो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट से रिलीज होती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. एंड द लीव्स आर ऑल्सो नोन एज, जो लीव्स होती हैं हम इनको फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं, एंड किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. Activity testing a leaf to show the presence of starch. Now what you will do, you will take a leaf from a green plant and expose to sunlight. आप 5 to 6 hours के लिए रखेंगे and boil the leaf in water for few minutes. Boil the leaf in spirit and without being pale, white, hard or brittle, dip the leaf in hot water. Put few drops of iodine solution on the leaf and the leaf will turn blue black. वो blue black हो जाएगी. That will be indicating there is a presence of starch. Next is material required for photosynthesis. What are the materials that are required for the process of photosynthesis? That is your water and minerals. The roots of the plants hai, what they do, they absorb water and minerals from the soil with the help of root hair. Plants have tissue through which minerals and water move from the roots upward and through the stems and branches. Next is carbon dioxide. It is a gas present in the air that enters leaves through small openings on the surface of the leaves. In openings forms stomata कहते हैं, and it is surrounded by 2 kidney shaped guards है. ये क्या करता है? ये regulate करते हैं opening and closing of the stomata. Next is to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Place a plant in a dark for at least 24 hours and put leaf of same plant in a plastic bag contain a soda lime. A, put another leaf of plant in a clean plastic bag containing water and what mark it B and leave the plant in sunlight for 6 hours. और आप 6 घंटे के 6 hours के लिए इसको छोड़ दो and take out both the leaves and boil them in alcohol. और आप इनको अल्कोहल में बॉईल करो और परफॉर्म करो आयोडीन टेस्ट. Then what you will observe, a leaf does not turn blue black color. Blue black color नहीं होगी when iodine test is performed. Next is leafage. Soda lime absorb little CO2 in the plastic that no carbon dioxide is available, carrying out photosynthesis and no starch is synthesized. और जो starch है वो भी synthesize नहीं होता. इसमें negative iodine test होता है and the leaf did not turn blue black. लीफ बी की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड वाज अवेलेबल टू द लीफ टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. स्टार्च वाज प्रेजेंट लीडिंग टू द पॉजिटिव आयोडीनेस. और जो लीफ है वो आपकी कैसी हो जाती है? ब्लू ब्लैक हो जाती है. कंक्लूजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इससे क्या कंक्लूड हो रहा है कि फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी. Next is chlorophyll. It is a green pigment that is present in the cell organelle called chloroplast or plastid. Due to the presence of chlorophyll, it is present mostly in green leaves of the plant. Where it is present, chlorophyll is present mostly in the green leaves of the plant. Next activity is to prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Now I will tell you, I will prove it that why I was saying that chlorophyll is very important and necessary for photosynthesis. Take a plant with variegated leaves such as croton or clone leaves with yellow and green patches. Destarch the plant by keeping it in the dark for 40 hours. Then keep the potted in sunlight for 5 to 6 hours. Pluck one leaf और आप टेस्ट करोगे स्टार्च को by dipping it in iodine solution. You will notice that green area turn blue black indicating presence of starch. और जो नॉन ग्रीन एरिया है वो पेल येलो रह जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सनलाइट. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. किसमें चेंज होती है? केमिकल एनर्जी. नाउ एक्टिविटी टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी. As I have told you that sunlight is necessary, I will also prove it. How?
what you will do, you will take a plotted plant in a dark for 2 days, cover the middle part. आप एक पार्ट जो होता है मिडिल पार्ट लीफ का उसको कवर कर दीजिए. जैसे आप उसको कवर करेंगे ब्लैक पेपर से, इट डज नॉट गेट एनी सन, उसको कोई सनलाइट तो मिल नहीं रही है. देन व्हाट यू विल नोटिस, लाइक कीप द प्लांट इन सनलाइट रहने, एक दिन के लिए रखिए एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. व्हाट विल हैपन टू द लीफ एज वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, यू विल नोटिस दैट द पार्ट ऑफ लीफ जिसको आपने दूर रखा था सनलाइट से वो येलो ब्राउन हो जाएगा, राइट. एंड while the part of leaf that is exposed, it will turn blue base. Conclusion is the absence of stars shows that photosynthesis did not take place, and this shows that sunlight is necessary for photosynthesis. It also tells us that the sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Now, what are its importance? All animals directly or indirectly depend upon the food, and the absence of plants, there would be no animals or living. ना तो कोई animals होंगे ना कोई living thing होगी. Photosynthesis maintains the balance of carbon dioxide and oxygen. What it's do, ये एक balance maintain करके रखता है carbon dioxide और oxygen की in the environment. Photosynthesis enables green plants to make their own food. In the absence of photosynthesis, there would be no green plants. कोई भी green plants वहाँ पे available नहीं होंगे. Next is heterotrophic mode of nutrition in plant. There are some plants that do not contain chlorophyll and cannot prepare their own food. They depend upon other plants or organisms to obtain their nourishment. They are known as heterotrophic plants, or it is known as heterotrophic mode of nutrition. Now, like parasitic nutrition, it is a heterotrophic. ये दूसरे plant पे depend होते हैं. Like some organism depend on body of other organism for nutrition, and which an organism derived their food from the living organism. जैसे आपका कसकोटा का plant होता है. It is a parasitic plant. It obtain its food from parasite. और एक organism है from whose body is contained called host. There are 2 types of parasite. वो partial and partially किस पे depend करते हैं? दूसरे खाने. ठीक है, जो total partial parasites होते हैं वो completely dependent होते हैं. ठीक है, like कसकोटा और डोडा. Next is saprotrophic mode of nutrition in which organism obtain its food from dead and decaying organism. ये किससे food obtain करता है? Dead and decaying organism से और plants. इन्हें हम saprotrophic nutrition कहते हैं. They depend on dead and decaying plants. किस पे depend करते हैं? Dead और decaying plants के. जैसे for fungi, molds, bacteria, mushroom. What are these? These are saprotrophic plants. Now it is an activity to observe the growth of molds. You have to take a container and a piece of bread. Take a piece of bread and place it in a container. Sprinkle some water and close the container. Open the container after 2 days. What you will observe there, हम क्या observe करेंगे कि that you will see some white or brown fluffy patches on the bread, and this kind of fungi called molds grow on the food items. नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को खाता है, लाइक वीनस फ्लाई फ्लाई. जैसे इंसेक्ट आके बैठते हैं वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है. देयर आर सम ग्रीन प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, और इंसेक्ट्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. दे आर जनरली ग्रीन प्लांट्स, देयरफॉर दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट रिक्वायर नाइट्रोजन दैट दे डू नॉट गेट फ्रॉम द सराउंडिंग. दे फीड ऑन इंसेक्ट टू कंप्लीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. कॉमन एग्जाम्पल जो है वो पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट में क्या होता है, देयर जो लीफ है दे फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज माउथ ऑफ द पिक्चर. हेयर्स आर प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इनसाइड द पिक्चर व्हेन इंसेक्ट गेट पिक्चर द लिड्स क्लोजेस. लिड्स क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है. ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मीन्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन, मतलब दो ग्रुप या दो पीपल के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं. द मोड ऑफ लिटरेचर इन विच 2 ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. जैसे लिचेस, दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. दे आर कंप्रेस्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंगस, जो एक साथ रहते हैं. The algae contain chlorophyll and make their own food. They require water and mineral. They provide fungi and return shares the food made by the algae. इस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म को. They are generally found in tree trunk.
और एल्गी आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, जहाँ रुका हुआ पानी होता है। आप देखते हैं ना ग्रीन हो जाता है। Now the fertilizers and manures, they are contain plants nutrients like nitrogen, potassium and phosphorus. They are added time to time. उनको हम time to time add करते हैं and farmers इनका use करते हैं, ठीक है। These nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil. Rhizobium bacteria जो आपका leguminous plant पे रहता है, वो soil को enrich करता है with the nitrogen. And so the farmers did not need to add fertilizer where leguminous plants are growing. हमें fertilizer वहाँ add करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आपके leguminous plant, ठीक है। Now chapter has been completed. In this chapter I have told you about different modes of nutrition, autotrophic modes of nutrition जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, heterotrophic nutrition जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे insectivorous plants हो गए, symbiotic plants हो गए, these are the saprophytic plants हो गए, these are the heterotrophic modes of nutrition. Now our chapter has been completed. That's all for today. Thank you.